तो वर्ल्ड वार 2 रे सबुठु बड़ इम्पोर्टेंट कौन ना वर्साइलिस एंड क्वेश्चन थाए कि वर्ल्ड वार 2 is the sequence of the World War 1 critically analyzed and Treaty of Versailles and appeasement of Germany the reason behind World War 2 ये तुम्हारा क्वेश्चन आसे या ऊपर से अनुसार क्वेश्चंसटा लिखिबो एवं ट्राई करिवो कथा होला कि वर्ल्ड वार 1 एक्चुअली एंड हैला तापर ट्रिटी हैला ट्रिटी ऑफ वर्साइलिस रे ही वर्ल्ड वार 1 एंड हैला ट्रिटी ऑफ वर्साइलिस ये गोटे बेसिकली imposed on Germany that means Germany was even not given chances to heard their grievances so this treaty was imposed on the Germany and according to this treaty uh, that is these are the treaty major terms of treaty कन्वेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन बनागला ଏବଂ लीग ऑफ नेशन रे जर्मनी को एलाउ करागला जॉइन करने लीग ऑफ नेशन रो पर्पस थिला टू पीसफुल सॉल्यूशन टू मेक इट शुड नॉट हैव अनदर वर्ल्ड वार लाइक दिस सिचुएशन द फ्यूचर बट लीग ऑफ नेशन जोंडे कि जर्मनी को एलाउ करना था देन राइनलैंड एंड डिमिलिटाराइज्ड वाज डिमिलिटाराइज्ड राइनलैंड थिला जर्मनी रो से एरिया रो मिलिटरी तार बेस थिला जर्मनी रो से एरिया को मिलिटाराइजेशन रो हटे दिया गला एवं सारलैंड विथ रिच कोल फील्ड ये एरिया नहीं गला किए ना फ्रांस टेकन ओवर बाय फ्रांस एंड अल्सेस एंड लोरेन फ्रांस को रिटर्न कर दिया गला जोंटा कि फ्रांस ठारू जर्मनी नहीं जाइथिला बिस्मार्क समय रो एंड जर्मनी forbidden to unite ऑस्ट्रिया क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी मिसिकी ही वर्ल्ड वार स्टार्ट होता एंड ऑस्ट्रिया हंगेरी इनिशिएशन पर ही ये वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होता तो से जर्मनी को यूनाइट करने को दिगला नहीं लैंड ऑफ ईस्टर्न जर्मनी द रिच फार्मलैंड ऑफ पोशन एंड द पोलिश कॉरिडोर बिटवीन जर्मनी एंड ईस्ट प्रुसिया गिवन टू पोलैंड तो ये एक्चुअली ऑफिशियली दे देखियो पोलैंड रो कंट्री एज ए कंट्री पोलैंड रो क्रिएशन आफ्टर वर्ल्ड वार 1 ହେଇଛି आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस देयर इज नो पोलैंड लाइक कंट्री के पोलैंड को ना सेमती किसी लैंड थिला एक्चुअली पोलैंड को गोटे लैंड देकी गोटे अलग कंट्री क्रिएट करागला से so all German colony taken and given to France and Britain as mandates जर्मन कॉलोनी जहाँ थिला जहाँ जोठी जर्मनी रूल करथला से सब जगह जेमती ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया थिला से बेला जर्मन कॉलोनी जहाँ थिला सेटा फ्रांस और ब्रिटेन बांटी की नहीं गले जर्मन आर्मी रेस्ट्रिक्टेड 1 लाख मात्र लक्षे रु अधिक लोक रखिपारे नहीं जर्मन रे भी रेस्ट्रिक्टेड टू 6 बैटल शिप एंड नो सबमरीन किसी रही आ 6टा बैटल शिप रहिबो जर्मनी नॉट अलाउड टू हैविंग एनी एयरफोर्स रखिया मना कला जर्मनी रो Germany was responsible for causing all the loss and damage caused by the war. जर्मनी को ही करागला कि वर्ल्ड वार हेलारे हबा पछरे जर्मनी ही सब बड़ दोषी आउ जर्मनी को सब क्लियर करिया पड़िबो सेथि जर्मनी को ये गोटे ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थिला जर्मनी पई ए ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी अब अत्यंत लज्जाजनक ट्रीटी थिला जर्मनी पई व्हाई डिड जर्मन्स object to the treaty of especially German consider it was a dictated माने जर्मनी को फोर्स करागला विदाउट गिवन द चांस ठीक जर्मनी को कहवा को किसी मौका दिगला नहीं जर्मनी को मन इच्छा से माने शास माने पुट कले से आनागला टर्म्स आर इम्पोज्ड अपॉन जर्मनी व्हेन जर्मनी disagreed the allies threatened go war again नहीं तो से माने जर्मनी जोटी ऑब्जेक्ट कला कहला ना ये ठीक ना जदि ठीक नुहे आमे तो सहित वार करू डू यू वांट टू वार अगेन से बेले ताको थ्रेटन कले दी वार गिल्ट क्लॉज जोटे कि stated that Germany had caused all the loss and से क्लॉज अछि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस रे सेटा को वार गिल्ट क्लॉज को सेथरे को आइछि कि
जहाँ भी किसी लॉसेस होइची ऑल द लॉस एंड डैमेज कहार ना जर्मनी जो हुई ओनली बिकॉज ऑफ जर्मनी केबे भी कौन सी वार जनक हुए कौन सी वार कौन सी तुम कहते दी हाथ ताली बाजेनी नहीं कौन सी वार या कौन सी किसी लड़ई केबे भी या बैटल गोटे जनक जो हुए बट ट्रिटी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार पर जर्मनी को पूरा वर्ल्ड बॉडी जोटा कि सुपर पावर जो से समय जो मैंने थे ब्रिटेन जर्मनी यूएसए ब्रिटेन फ्रांस यूएसए रशिया समस्ते बसिकी बेसिकाली फोर्स कले कहले कि तु ही ओनली रेस्पॉन्सिबल यू आर ओनली and war and of the war and was considered on war guilt clause which stated that Germany had caused all the loss and damage war and was considered unjust. So ଲେଖିବ ଲେଖିବ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କି first world war it is the continuation of first world war leads to second world war किंबा ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ହେଇପାରେ कि first world war the the first world war resulted into second world okay নহলে treaty of Versailles and policy of appeasement leads to second world war ये सब विषय मेन मिलिटारी कहबे आगु पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट माने जर्मनी देखिले ता प्रति आउ पूरा वर्ल्ड भी सब जानिला कि जर्मनी प्रति बहुत भूल है वर्साइलिस पर ओके ट्रिटी ऑफ वर्साइलिस पर ये देखला कि ये जर्मनी प्रति बहुत भूल है राइट तो ब्रिटिश हो अदर कंट्री हो खास करके फ्रांस ब्रिटिश एमाने देखिले कि जर्मनी प्रति बहुत अन्याय है यानी एते ताकू सिवियर पनिश करवा कथा नु बट जर्मनी जानी यही जिन से रियलाइज कर रियलाइजेसन नहीं कि खास करके हिटलर तार जो इनिशियली जो पॉलिसी थी हिटलर कौन करुला ना एग्रेसिव पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसी से समय इनिशियली से माने किछि कहले नहीं हिटलर जो एग्रेसिव पॉलिसी धीरे धीरे वन बाय कंट्री जो एल्सेस लॉरेन ये सब एरिया धीरे धीरे नहीं गला मिलिटारी बढ़ेला ये टर्म्स को सी मानिला नहीं जो जो टर्म्स थिला ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस रे देन धीरे धीरे हिटलर को भी रियलाइज है कि एमाने मत कि कहे ना तार से फायदा उठेला और तार फायदा उठे 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 लास्ट पोलैंड को अटैक कला वर्ल्ड वार 2 है तो दैट इज द रीजन पॉलिसी ऑफ ट्रिटी ऑफ वर्साइलिस जो कंडीशन थिला सेटा को जर्मनी फॉलो न करूथला परे भी जर्मनी को एमाने एपीज कहीं से भावुले गोटे हिस्ट्रिकल मिस्टेक देछि अगेंस्ट द जर्मनी लेटर फेजेस रे एट आफ्टर 10 12 इयर्स पर so military terms of treaty कौन ना of 1 lakh army of 1 lakh only 6 battleship no submarine or aeroplanes German said left them powerless against even the tiny new nations जो मिलिटारी टर्म रे कहले 6 बैटलशिप रहिबो सबमरीन रहिबो नाही एरोप्लेन रहिबो नाही आर्मी मात्र लक्षे रहिबो सी कहला भाई छोटिया मोटिया कंट्री भी ताको हरि दी पळेबो जर्मनी कहला स्टिल देन एमाने सुनिले नाही देन repatriation basically set eventually 1921 of 6.6 billion euro be paid in installment until 1984. The figure enabled the Germans to protest and they soon began sorry से पैसा बुझी पारछ तो 6.6 बिलियन यूरो जर्मनी को दबा को पड़ा दबा को हम एवं इनस्टॉलमेंट देवे 1921 रे सेट करागला कि 19 इनस्टॉलमेंट दवापाई एनाबल करागला बट जर्मनी से भी देलानी पैसा नाला
The territorial terms of the Treaty of Versailles also made Germans to तो जो जो एरिया तांको पाखरु नहीं गला जर्मनी माल्सेस लॉरेन नहीं गले सारलैंड को नहीं गले फ्रांस को राइनलैंड को डिमिलिटराइज करवा ये टर्म्स रे भी सी एग्री न ट्रीटी ऑफ सेवरे 1920 वेरी इंपोर्टेंट से ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस रो पार्ट ट्रीटी ऑफ सेवरे रे टर्की ट्रीटी ऑफ सेवरे तो ट्रीटी ऑफ सेवरे बेसिकली कौन जानिच आम इंडिया पर्सपेक्टिव ये वेरी इंपोर्टेंट हमर खिलाफत आंदोलन वगैरह एथुर पई हेतिला 1919 हेतिला सेइथरे डीलिंग विथ टर्की so Turkey lost the eastern France and the Aegean island and Samarna to Greece and Adalia and Rhodes Italy ये area नहीं पड़ेगले and the straits were to be permanently open. Syria became French mandate. Syria French under को पड़े असला and Palestine, Iraq and Transjordan British mandate को पड़े गला. Palestine, Iraq, Transjordan basically British mandate को पड़े असला. तो ये ट्रीटी ऑफ सेवरे कौन है से ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस अंडर पांचटा ट्रीटी थिला ओके तो ये गोटे पार्ट एवं ट्रीटी ऑफ सेवरे कौन है ना मोहम्मद ये जी कि खलीफ खलीफ तांगर थिला टर्की रे कैलिफ को हटे दिया गला सेति आमर खिलाफत आंदोलन होता मन अच्छी मॉडर्न हिस्ट्री देखिबो खिलाफत आंदोलन बुझीगला ट्रीटी ऑफ सेवरे 1920 डीलिंग विथ जोटे कि ऑटोमन एम्पायर से समय थिला तो टर्की रो किछि पार्ट जेमिति जर्मनी रो किछि पार्ट बांटी कि नहीं गले टर्की रो पार्ट भी बांटी कि नहीं गले एंड सीरिया बिकम ए फ्रेंच मैंडेट पैलेस्टाइन इराक एंड जे ट्रांसजॉर्डन को नहीं गले किए इस मैंडेट अंडर देन ट्रीटी ऑफ लाउसाने 1923 टर्की रिगेन्ड ईस्टर्न फ्रांस जोटे कि इंक्लूडिंग कॉन्स्टेंटिनोपल एंड स्मायर्ना जोटा कि तुम देखिए एबे टर्की टिके पार्ट अच्छी जोटे कि बस्फोरस स्ट्रेट एपटे साइड है तुम कन्स्टांटिनोपल जोटा कि इस्तानबुल एबे ना अच्छी तार से पार्टा को ये रिगेन नहीं गला एंड टर्की वाज देयरफॉर द फर्स्ट स्टेट टू चैलेंज द पेरिस सेटलमेंट सक्सेसफुल पेरिस सेटलमेंट को ये चैलेंज करता माने जबरदस्ती नहीं गला माने जो ट्रीटी पर देन लीग ऑफ नेशन वेरी इंपोर्टेंट लीग ऑफ नेशन कौन पाई आसला कि वर्ल्ड वार को एंड कला एंड वर्ल्ड वार को एंड कला परे इट प्रोवाइडेड फॉर द फोरम फ्रॉम रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रोवाइड फोरम फ्रॉम रिजॉल्विंग इंटरनेशनल तो द मेन एम कौन थी लीग थिला टू मेंटेन पीस एंड थ्रो कलेक्टिव जोटा कि यूनाइटेड नेशन रो एम अछि यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन हैला लीग ऑफ नेशन पर वर्ल्ड वार 1 पर लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन है लीग ऑफ नेशन रो ना चेंज कर दिया गला यूनाइटेड नेशन कहीं ना लीग ऑफ नेशन फेल्ड जो तार एम थिला कौन ना मेंटेन पीस पीस ही मेंटेन करि पारलानी प्रो कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये मेन एम थिला ये गोटे फोरम थिला जोटा कि डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करिया पे बना हितला 1919 रे देन आसिला मुसोलिनी फॉरेन पॉलिसी यू नो हु इज मुसोलिनी हम्म हम्म
मुसोलिनी फॉरेन पॉलिसी, बेनिटो मुसोलिनी। फासिस्ट फासीवादी शासन करते मुसोलिनी केम टू पावर इन 1922 टू टिल 1943 पर शासन करते। ड्यूरिंग मुसोलिन अर्ली रिजिम फॉरेन पॉलिसी वाज कंफ्यूज 23 to 34। ये बेसिकली समहाउ हिटलर को फॉलो करता। इनिशियली सी ठीक ठाक थिला, ये निजे भी क्लियर नथिला कौन फॉरेन पॉलिसी। एट दिस स्टेज मुसोलिनी पॉलिसी वाज डिटरमिन्ड बाय राइवलरी विथ फ्रांस। तो फ्रांस सहित राइवलरी थिला, इटालियन फ्रांस कॉन्फ्लिक्टेशन देखिदबो। एंड फ्रांस इन्फ्लुएंस इन बाल्कान एंड मेडिटेरेनियन सी ये रीजन रे उपरे यार फॉरेन पॉलिसी थाए मुसोलिनी रो। So another consideration was Germany and its influence over Austria. Germany and its influence over Austria. It dealt with both problems in diplomacy. It dealt with both problems using diplomacy. So initially phases रे जर्मनी रे गोटे ऑस्ट्रिया ऊपर इन्फ्लुएंस तो थिला ही थिला, तमे जानिଛ वर्ल्ड वॉर पूर्व। देन प्रॉब्लम हैला कोन, गोटे है फ्रांस गोटे राइवलरी अच्छी और जर्मनी। जर्मनी ऑस्ट्रिया सहित इटाली बहुत सारा रिलेशन थिला। ऑस्ट्रिया एम्पायर इटाली जो जन्म होता इटाली यूनिफिकेशन जो पढ़ी कही ऑस्ट्रिया हंगेरी सहित बहुत सारा टेरिटोरी जोटा कि ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर अंडर थिला, इटाली ताको यूनिफिकेशन नहीं जाइए। तो ही ट्राइड हाँ हाँ बुझीगलानी। हाँ फासिस्ट कहुए फासीवादी फासी माने तांकर पार्टी थिला। एमती नाजी पार्टी थिला जर्मनी रो हिटलरंकर, सेइथिरे यांकर फासी पार्टी थिला, फासिस्ट तो तांकर आइडियोलॉजी को फासीवादी कहा जाए। So he dealt with both problems using diplomacy, जोटा कि जर्मनी एंड इन्फ्लुएंस ओवर ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस रो इन्फ्लुएंस ओवर बाल्कान लैंड एंड मेडिटेरियन रीजन। तो इमेजिन करि परथुओ तुमर वर्ल्ड मैप रे बाल्कान लैंड कोठी एंड मेडिटेरियन सी। he tried to cultivate good relationship with britain USA, ब्रिटेन, रशिया, ग्रीस, हंगरी एंड अल्बानिया। एमान सहित भल रिलेशन मेंटेन करिया चाहता किए। आफ्टर 1934 एठू सिचुएशन चेंज है। तो मुसोलिनी इनिशियल पॉलिसी was not clear. He was basically depend on the policy of Germany and France mostly. Then after 1934, Mussolini drifted from extreme suspicion of Hitler to admiration and desire to imitate him. इनिशियली हिटलर को बहुत सस्पिशियस देखला, बट से धीरे 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 हिटलर को फॉलो करिया लगिला। slowly steadily he tried to follow Hitler, ताको इमिटेट करिया लगिला। his changing attitude can be clearly understood by the following event कोन, when Hitler announced reintroduction of the conscript। what do you mean by conscription, can anybody tell me? Do you know? Conscription माने compulsory military service। okay, conscription means compulsory military service। compulsory military service। तो जिते ये इंट्रोड्यूस कला क्या जर्मनी थिला वर्ल्ड वार वन पूर्व ये कन्स्क्रिप्शन रखी वर्ल्ड वार वन पर से पॉलिसी एगेन आनिला, जोटा कि एलाउ करा जाय नथिला 1 लाख रु अधिका करि परिबो नाही। ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस रे सेटा को से ब्रेक कला, तळे के किछ कहलानी, कन्स्क्रिप्शन रीइंट्रोड्यूस कला एंड मुसोलिनी जॉइंड इट। ब्रिटेन आउ फ्रांस कंडेम्ड दिस जर्मनी एक्शन।
1935 stress of front 1930, but later Britain signed Anglo-German naval agreement. मैं केमिति तुमे ताको क्रिटिसाइज करूछ, बट नाभाल एग्रीमेंट रे भी जर्मनी आ फ्रांस सहित डील हे गेला। तो एठू देखा जाउची कि पिच करूचंदी से जाऊँ भूल होती एवं खास करके हिटलर आसिया परठू बहुत किछि माने पिच करचंती। 1935 इटालीज इन्वेजन ऑफ एबिसिनिया, एबिसिनिया को इटाली इन्वेजन कला। सी देखला जर्मनी रे जेमती एग्रेसिव पॉलिसी सेमती एग्रेसिव। द लीग कंडेम इटाली aggression and imposed sanction, but at the same time did not stop supply of oil coal to Italy। जेमिति मानिनियो जर्मनी रशिया रशिया अटैक कला यूक्रेन को, समस्त क्रिटिसाइज कले, सैंक्शन भी लगा गला, बट ऑयल परचेज यूरोप स्टिल करथला गैस करी, खास करके गैस तांकर सेठी न हले चली परिबेनी, गैस परचेज यूरोप करथला। इंडिया को कहथला भाई तुमे तेल किणनी तेल किणनी तेल किणनी, भाई आमे काई किणिबुनु, तुम सहित वार चलची, यूरोप को सी अटैक करिची, मोर नाइबरिंग कंट्री को अटैक करिची, आ तुमे ता सहित एक्जेक्टली सेम जिनस हितला, तुमे क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज करूछ, बट ता सहित साइन करूछ ऑयल कोल सप्लाई इटाली को करि चलछ। दिस वाज बिकॉज ब्रिटेन एंड फ्रांस वर ट्राइंग टू अपीज ओनली। एटाला अपीजमेंट जोटा देखो पढ़ाऊँ, एटाला अपीजमेंट, ट्राई टू अपीज only and revive the Stresha front against। Stresha front कौन बेटा कि जोटा कि बंद कराइतला इटाली पाई। ब्रिटेन फ्रांस इटाली मिसिकी बेसिकली गोटे आलियान्स होता स्ट्रेसा फ्रंट कह जाए। Okay. 1936 during the Spanish Civil War is also very important. Mussolini extended support to Franco, that is the right wing nationalist leader। कहार स्पानिश रो स्पेन रो जोटा कि फ्रांस रो जाई कि राइटिस्ट जो माने फ्रांस सॉरी फ्रांस रो को स्पेन रो जोटा कि फ्रांस एग्नेस्ट जो माने थिले। हां हेलो रोम बर्लिन एक्सिस वेरी इंपोर्टेंट से एमान को एक्सिस पार कह जाए क्या इटाली आ जर्मनी को एक्सिस पार कह जाए। देखो रोम जर्मनी यही भाया थी सॉरी रोम जर्मनी को खाली जर्मनी और इटाली। तो रोम बर्लिन एक्सिस दैट इज मुसोलिनी रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विथ हिटलर, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। या सहित सेटलिंग हो गला मुसोलिनी आ हिटलर। इनिशियली हिटलर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करथला मुसोलिनी, बट या भीतर गोटे संधि हो गला। And 1937 Italy joined anti-Comintern pact with Germany and Japan against what? Russia। देन आउरी मुसोलिनी कौन कला? 1939 Italian troops occupied Albania। 1939 also Italy signed Germany the Pact of Steel, which promised full military support Germany in case of खत्म। या परे वार हबो। मैं मुसोलिनी रो देखिलो, या परे देखिबो कहार हिटलर रो।
क्लियर ये समस्त क्लियर देखीदेल मौसुमी एसेसमेंट ऑफ हिटलर्स एम्स इन फॉरेन पॉलिसी तार फॉरेन पॉलिसी जानिले ही तुम जानिबो कि वर्ल्ड वार 2 काहे कि हिटलर होप टू मेक जर्मनी ए ग्रेट पावर अगेन ये जेमिति एबे ये नो पुतिन से जेमिति अनेकी बसिनी कि सेई समय यूएसएसआर जो भलिया सिचुएशन नहीं जीवी स्वप्न देखिकी सी जो करुच्ची से भलिया ये भी माइंडसेट destroying the hated Versailles settlement सी द्वितीय वर्साइली सेटलमेंट को सी घृणा करुला बिल्डिंग ऑफ द आर्मी बिल्ड कला वर्साइलिस जो कंडीशन को सी मानिला नहीं रिकवरिंग लॉस टेरिटरी सच ए सार एंड पुलिस कॉरिडोर जोटा कि दिया ट्रिटी ऑफ वर्साइलिस ये एरिया को रिकवर करागला रिकवर करने एरिया bringing all Germans inside the reach that is the annexing territory that is large German minority population से समस्त को जोड़ी नेला समस्त को तांको भितरे जोड़ी नेला वर्साइलिस को मानिला नहीं आर्मी को बिल्ड करे सेटा को बिल्ड कला रिकवरी लॉस टेरिटरी सच एज सार एंड पुलिस कॉरिडोर ब्रिंगिंग ऑल जर्मन इनसाइड द रीच माने बेसिकली तांकर जो माइनॉरिटी एरिया से एरिया को समस्त को सी जोड़ी नेला एंड हिटलर बिगेन हिज फॉरेन पॉलिसी सीरीज ऑफ सक्सेस कौन 1933 विड्रॉ कला जर्मनी फ्रॉम डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस एंड लीग ऑफ नेशन कहला लीग ऑफ नेशन हम रहेगा नहीं लीग ऑफ नेशन में हम नहीं रहना वाला है बाहरी गला 1935 announced reintroduction of conscription मन अच्छी कही से फास्ट जोटा कि मुसलनी समय तो reintroduction of conscription 1936 sent troops into Rhineland जो थे राइनलैंड रे मना कराइथिला कि ट्रुप्स सेठी रखी परिबो नै डीमिलिटाराइज जोन कराइथिला से डीमिलिटाराइज जोन रे मिलिटारी से पठे देला तो वायलेशन ऑफ वर्साइलिस एंड ऑफ लुकार्नो कार्नो टीटी रे पार्ट थिला 1936 formed the Rome Berlin axis formed the Rome Berlin axis मने अछि कहिथिले एबे भी जोटा कि एंटी कमिंटन पैक्ट विथ इटाली एंड जापान 1937 सपोर्टेड फ्रांको फ्रांको को किए सपोर्ट करथिला मुसोलिनी भी करथिला ये भी कला दी जन को देखो जोड़ीदारी चलची इन स्पेनिश सिविल वार अब फ्रांको को ना फ्रांस पसंद करथाय कि एगेंस्ट फ्रांस थिला और एगेंस्ट ब्रिटिश थिला सेति पई माने फ्रांको को सपोर्ट करथन एंड मेड जर्मनी गेन मिलिटरी एंड एक्सपीरियंस मिलिटरी एक्सपीरियंस पई जर्मनी को हेल्प कला काहे कि ना जर्मनी तार ट्रुप्स पठेला सेठी एवं जर्मनी तार ट्रुप्स को टेस्ट करे चाहुतला कि एमाने केमिति लड़ी पारुचंती 1938 एनेक्स ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को जोड़ी नेला बुझिपाला नहीं धीरे 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 इज इंचिंग टुवर्ड्स इट्स गोल inching towards its goal. Hitler was allowed to get away. Hitler was allowed to get away with all these violation of Treaty of Versailles because of appeasement माने जानिछ appease करिवा खुश करेइवा काहे कि they thought it was a mistake. The Treaty of Versailles was a mistake.
So appeasement was a policy followed by British and later by the France. It meant to avoiding war with aggressive powers such as Japan, Italy, and Germany by giving away their demands, provided they are not too unreasonable. ବୁଝିଲ ନାଇଁ ଯେମିତି ରାଇନଲାଣ୍ଡ ନେଇଗଲା କହିଲା ଭାଇ ତାର ମିଲିଟାରୀ ନହେଲେ ରହିବ କୋଉଠି ଓକେ ଆଲସେସନ୍ ଲରେନ୍ ନେଇଗଲା ସେ କହିଲା ଭାଇ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ନେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ତାକୁ ନେଇଗଲା ରିଟର୍ନ ସେଇଭଳିଆ 1920 ଦେନ୍ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲା ପୋଲିସ କରିଡର ବଗେରା ଯେଉଁ ନେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବି ଏମାନେ କିଛି କହିନଥିଲେ ଦ ପଲିସି ଅଫ୍ ଏପିଜମେଣ୍ଟ ବିଗେନ୍ ୱିଥ୍ ଡାଉଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାର୍ନୋ ଟ୍ରିଟି स्टार्ट होता 1920 रे 1920 रे दाविस एंड यंग प्लान एंड लुकार्नो ट्रीटी या लुकार्नो पैक्ट तो दाविस एंड यंग जानिछ ट्रीटी मुझे कहूनी या विषय डिटेल्स कहीं तुमको जानिले फिर पुणी अधिका ये हो बेसिकली जर्मनी रो जो इश्यूज थिला जो बर्डन थिला ताकू हैंडल करिया पे दीटा को पैक्ट थिला कि जर्मनी तार देख आसिक कहले देखो भाई आमर पैसा नहीं आमर तुम्हें सब जगह नहीं गल आमको आर्मी को ना बढ़े देल ना आमको माने जो एरिया थिला जोटे कि आमर कूल रिच एरिया फर्टाइल एरिया से एरिया को नहीं गल तो आम चलिया केमती तो से किसी बेनिफिट दिया ता इश्यू को सल्व कराइला से ये ट्रिटी कह जाए इन मे 1937 व्हेन नेवाल चैम्बरलिन बिकम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर very important he gave a new impetus to the impeachment ये बहुत बेसिकली जर्मन सपोर्टर था चैम्बरलिन he wanted to show Hitler that claims could be met by negotiation rather than force तो मे 1937 चैम्बरलिन आहुरी एपीजमेंट को बढ़ई चलले बुझीगला जस्टिफिकेशन फॉर अचीवमेंट कौन पाई एपीजमेंट है इट वाज तो एसेंशियल टू एवॉइड वार इनिशियली आउ देख वर्ल्ड वार 1 पर कहीं चाहून ग्रुप रे कहीं चाहून कि वार हो तो एवॉइड वार ब्रिटेन एंड फ्रांस आर फाइनेंशियली डिप्लीटेड आफ्टर द वार खुदरा खाली वार करिए धमकाउଥିଲେ बट वार करिया पे औकात भी दरकार एते लड़ी also public sentiment in the Britain was to avoid any kind of war यही चाहून लोक भी चाहून भाई आउ वार हो लोक माने 90% घर लोकंकर यंग पॉपुलेशन नथिले वार रे many felt that Germany and Italy had a genuine grievances many felt that Germany and Italy had many grievances तार जो issues अच्छी सेटा genuine and as they believe that Germany and Italy were harshly treated under the Treaty of Versailles यानी से माने बिलीव करती कि दी जन को ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस रे हार्शली ट्रीटेड कराई दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट if there is a question about the treaty of Versailles if there is a question about World War 1 World War 2 causes of World War 2 क्लियर एति बन समस्त लिखिदेल रेडी very important part
the League of Nations seems to be helpless. The only way to settle dispute was by personal contact with rivals. League of Nations केही पचारे नाही. League of Nations को केही पचारू નથી. The fear of communist Russia, Hitler's Germany was considered as a buffer against communist expansion. ये गोटे point कौन? After 1917 Russian Revolution या Leninism या communism established in and communism against एमाने थिले capitalist तार लीडर थिला ब्रिटिश. तो कैपिटालिस्ट आउ कम्युनिस्ट भितर जो बफर स्टेट को जर्मनी को यूटिलाइज करने से चाहता. जमी आम नेपाल को बफर स्टेट भाया यूज कले तुमर नेहरू. नेपाल भूटान को बफर स्टेट भाया यूज कले अगेंस्ट चाइना. सेम वे जर्मनी को बफर स्टेट भाया यूज कले अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सपांशन. कहीं कम्युनिज्म पूरा वाज ऑन इट्स राइज. तुम्हें देख जोटा कि सही समय जदि यूएसएसआर देख बहुत बड़ कंट्री थिला, बहुत बड़ नेशंस थिला जोटा कि प्रेजेंटली सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जो यूक्रेन वगैरह सबू ता अंडर थिला. यूक्रेन कंट्री नथिला तुमर ये सबू ता अंडर थिला. तो सेप्टेम्बर 1938 टू सेप्टेम्बर 1913 मेजर इवेंट. यही इवेंट ही बेसिकली वर्ल्ड वार टू कज. मुनिच कॉन्फ्रेंस 29 सेप्टेम्बर 1938 इतने कौन है ना सेटलमेंट रिच्ड बाय जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटाली दैट परमिटेड जर्मनी एनेक्सेशन ऑफ सडर्टन लैंड इन वेस्टर्न चेकोस्लोवाकिया. सडर्टन लैंड बहुत दिन सी नवापाई रेडी होता, बहुत दिन नवापाई सी रेडी होता. तो ये लैंड को बेसिकली यहाँ भीतर सेटलमेंट गोटे रिच होगा कि येस जर्मनी को दि जाऊ. नो चेक और रशिया रिप्रेजेंटेटिव वर इनवाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस. ये जो कॉन्फ्रेंस है इधर क्या डका नहीं ना चेक रिपब्लिक क्या डका ना रशिया क्या डक कहीं रशिया अंडर थिला. ये गोटे थिला. एज ए रिजल्ट ऑफ मुनिच एग्रीमेंट चेकोस्लोवाकिया वाज क्रिपल्ड विथ ए हेवी लॉस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन एंड टेरिटरी. 1939 non-aggression pact signed between USSR and Germany. जर्मनी देख तार केमती खेल कर चलती. नॉन एग्रेशन पैक्ट तो जर्मनी 1939 नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कला बिटवीन यूएसएसआर माने कौन के क्या आम एग्रेशन करूँ ना. एंड जर्मनी इन्वेजन ऑफ पोलैंड 1 सेप्टेम्बर 1939. जर्मनी इन्वेजन ऑफ पोलैंड इन 1 सेप्टेम्बर 1939 and 3rd September 1939 Britain declared war against Germany. Soon after France also declared war against Germany. World War II. Okay. जर्मनी पोलैंड एमाने साइन कले कौन पाई एमाने ब्रिटिश अटैक कला. ब्रिटिश कहला चेम्बरलिन से थिला. चेम्बरलिन बेचारा बहुत भरोसा करतला या को हिटलर को कहले भाई देख तुम्हें चेकोस्लोवाकिया अधा एरिया आम तुमको देदेलु जोटा कि तार तार सब बड़ माने इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया माने हाईली इकोनॉमिक जोन थिला ताकू तुमको देदेलु. तापर भी शांति है तापर भी तुम्हें आहरी लुभ पोलैंड को कहीं तुम्हें अटैक करदेल. चेम्बरलिन पागल हो गला तो खराब हो गला. 2 दिन भीतर से डिसाइड कला विल अटैक जर्मनी. स्टार्ट हो गला वर्ल्ड वार 2. ओके that's a major reason. So why did second world war broke out? Long ongoing debate about who and what is responsible for second world war. Versatile treaty of Versailles. Versatile में Versailles
has been blamed for foiling the Germans with bitterness and urge for revenge. League of Nations and idea of collective security has been criticized. The world economic crisis without which Hitler would not have been able to come to power. Where the appeasement blame? Yes, some historians कहते कि भाई appeasement was largely responsible for the situation deteriorating to the war. They argue that Britain and France should have taken strong position before Germany and become too strong under Hitler. Hitler एते strong हवा पूर्व किसी action नहीं Hitler धीरे धीरे strong ही जाऊतला. Did USSR make a war inevitable? USSR had been accused of making war inevitable by signing the non-aggression pact with Germany in 1939. Which was included a secret agreement of Poland पर्सनड बिटवीन यूएसएसआर एंड जर्मनी ये जो एग्रीमेंट थिला ए एग्रीमेंट कहला कि पोलैंड रो किछि पार्ट जर्मनी नबो आ किछि पार्ट रशिया नबो was Hitler to there was a general agreement during the and after the war was blamed to Hitler को blame कराइला Hitler had attacked Poland on all fronts which showed his intention to destroy Poland rather than just to go get back the what German lost at the Versailles ये पूरा पूरा डायरेक्ट सब फ्रंट रू अटैक करथिला जदि चाहिदा त भाई वर्ल्ड वार 1 रे आमे जहा नै जाइतिलो वर्साइलिस रे जहा नै जाइतिलो सेहा नै जीवो ना पूरा ऑल फ्रंट रू अटैक कला ताबे एठी देखौ जी तार इंटेंशन हला वर्ल्ड वार सो हाउएवर देयर इज ए डिफरेंट आर्गुमेंट एज वेल APJ Taylor in his book Origins of Second World War came up with the most controversial theory of that Hitler did not intend to cause major war but expected at most a short war with Poland এটা ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି କଲା ଓକେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ରିଜନ୍ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 1 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାसेସ୍ ଅଛି ଆଇ ହେଭ୍ ଟୁ ଗୋ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଗାଇଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆମେ କାଲି ବି ପୁଣି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 4ଟା ବେଳକୁ ରହିବ କାଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍